Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to be teaching you my signature delicious churros. So जो आज की recipe है, it is truly something very special, and the reason for that is that you guys have requested this so many times in the comments, and because I'm known for these churros, and I'm really excited that I get to share my secret recipe with all of you. It's super easy to make and just absolutely delicious. So let's get to it. For our churro dough, we will need 12 grams of caster sugar, 115 grams of butter, 240 milliliters of water, 1 gram of salt, 160 grams of flour and 3 eggs. A churro dough is very similar to a choux pastry. Choux pastry जो eclairs के लिए बनती है. इसके लिए हम पानी अपने पैन में डालेंगे along with the butter, the salt and the sugar. And we're just going to melt the butter. जब हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें अपना मैदा डाल के अच्छे से पका लेंगे जब तक लिक्विड जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हो जाता. We're going to cool this mixture then, and then we're going to add in our eggs off the heat, and we'll mix it in till it's well incorporated. और इस डो को फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे. जब ये ठंडी हो जाएगी और फ्रिज में तकरीबन हम 15-20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे. Then we'll put it in a piping bag and we're going to fry our beautiful churros. ये आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गया है and the water is also started coming to a boil. इस पॉइंट पे हम अपना मैदा इसमें डालेंगे and आपको लगेगा कि ये एक बहुत लंपी सा मिक्सचर बन रहा है, but eventually it will come together, so just be patient. ये अच्छे से जब हमारा मिक्सचर ड्राई हो जाएगा, as you can see, it's not sticking to the sides of the pan और water इसने पूरी तरह absorb कर लिया है. So we're going to switch off the heat. And we're going to put this into our stand mixer with a paddle attachment. We're going to turn the machine on and we're going to let this mix for about a minute or so, जब तक इसकी extra steam escape नहीं कर जाती. And we're going to then continue mixing this till it cools down at least by 50% before we add in our eggs. So now what we're going to do is we're going to whisk our 3 eggs and then we're going to turn the machine back on and slowly drizzle in the eggs. You have to make sure you do this a little at a time and wait for it to incorporate properly. अगर ये अच्छे से इसके अंदर नहीं mix होगा तो then it's going to be a mess. एग्स हमने लाइटली बीट कर लिए हैं. I'm going to turn the machine on and little by little मैं इसको मशीन के अंदर डालूंगी, मेकिंग श्योर ये साथ साथ मिक्स हो रहा है. एंड थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रुक जाएंगे. ये आपने एकदम से एग्स इसमें नहीं डालने, वरना ये स्क्रैम्बल्ड एग बन जाएंगे. That's it. We're going to take it out into a bowl and with the spatula we're going to mix it a little further till it completely comes together, but the eggs are well incorporated. अब अच्छे से अंडे जो हैं इसमें mix हो गए हैं. So you can see it's become quite nice and smooth. And now because it's cooled down, I'm going to cover it and put it either in the fridge or if it's cold, अगर मौसम ठंडा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं for about half an hour before using it.
For the salted caramel, we will need 100 grams of sugar, 100 milliliters of cream, 30 grams of butter, half teaspoon of salt and 2 tablespoons of milk. So now we're going to start making our salted caramel sauce. This is a very simple recipe. इसके लिए we're just going to start by caramelizing our sugar. इसको हम पैन में डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे. जो कैरमल सॉस मैंने आपको पहले भी सिखाई है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब चीनी मेल्ट हो रही हो तो आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना. ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप हैंडल के साथ पैन को इस तरह थोड़ा सा स्वर्ल कर सकते हैं, बट नथिंग मोर देन दैट. जब आपकी चीनी इस तरह ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाए, बस थोड़े से लम्प्स रह जाएं, यू कैन जस्ट यूज़ योर स्पून. देन यू कैन सी द शुगर जो है वो अच्छे से कैरमलाइज हो गई है. एंड आई एम गोना ऐड इन द बटर. मक्खन जब आपका इनकॉर्पोरेट हो जाए तो आप अपनी क्रीम भी इसके अंदर डाल लें. ये लीजिए, हमारी कैरमल के अंदर क्रीम भी चली गई है. यू कैन सी इट्स नाइस एंड स्मूथ. एंड एट दिस पॉइंट we're going to add in our salt. चूल्हा बंद करके, as it is salted caramel. अगर आपने plain caramel बनानी है तो salt बेशक निकाल लें. और क्योंकि ये एक dipping sauce है हमारे churros के लिए, तो end में हम इसमें milk डाल रहे हैं to basically thin it out. There you go, हमारी beautiful caramel sauce तैयार है. For the Nutella sauce, all we need is 100 grams of Nutella and 50 grams of milk. Nutella sauce के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही ingredients हैं. One is Nutella, and because of Nutella has become so expensive, if you want a cheaper alternative, something जो price उसकी ज़रा कम हो Nutella से, you can even use Choco Bliss. I'm adding in the milk a little at a time just to thin it out. For the cinnamon sugar, we need 200 grams of caster sugar and 1 tablespoon of cinnamon. अब lastly हम अपनी cinnamon sugar बनाएंगे, which is just sugar and cinnamon mixed together. This is going to be used to coat our churros. सो एज़ यू कैन सी हमारा ऑयल हमारे सामने पड़ा हुआ है कढ़ाई के अंदर. इसको मैंने गरम कर लिया है. जो हमारी चूरोस की डो है उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाला है, बट मेकिंग श्योर कि हम 2 पाइपिंग बैग्स यूज़ कर रहे हैं. एक के अंदर डाल के उसके ऊपर एक और चढ़ा दिया था, क्योंकि ये डो ज़रा हार्ड होती है. यू डोंट वांट कि आपका जो पाइपिंग बैग है वो बर्स्ट कर जाए. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस वीडियोज़ हाउ टू फिल अ पाइपिंग बैग, सो यू कैन वॉच दोज जस्ट फॉर रेफरेंस. इसके अलावा फॉर द चूरो शेप वी नीड अ स्टार नोज़ल. ये आपको क्लोजअप भी इसका दिखा दिया जाएगा. स्टार नोज़ल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट जितना बड़ा हो उतना बेहतर है. एंड देन वंस योर ऑयल इज़ हॉट वी आर गोना स्टार्ट फ्राइंग. सो आई एम गोना गो इन फॉर अ क्लोजअप सो दैट यू कैन सी द डिटेल ऑफ हाउ इट्स गोना बी फ्राइड. So this is the nozzle that I'm using. I've put my dough in the piping bags, and this is the nozzle. I'm going to put it in like this. I'm going to press it, twist it, press it, twist it, and just with the side of the pan we're going to slide it off, and ये इस तरह oil के अंदर चला जाएगा. We're going to repeat this with the remaining dough.
It'll take a little bit of practice because ये dough ज़रा hard होती है, but don't worry, once you get used to it, it'll become easy. So we're going to fry these for about 2 to 3 minutes जब तक ये अच्छे से golden brown नहीं हो जाते. So you can see हमारे जो churros हैं वो अच्छे से golden brown हो गए हैं and we're just going to take them out of the oil. Make sure to drain the excess oil. एंड इनको हम हल्का सा किचन पेपर पे टॉस करके अपनी सिनेमन शुगर के अंदर टॉस कर लेंगे. There you go. And then we're going to toss them. And ये हमारे churros ready हो गए हैं. We're going to start plating them up. So we're now just going to dish out our delicious churros. You can see they're looking so yummy and crispy. इसकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लें तो किसी को भी नहीं रियलाइज़ होगा कि आप लोगों ने ये घर पे बनाया है. लगेगा कि आप डेफिनेटली किसी शॉप से लेके आए हैं. They are looking so yummy and smelling wonderful. वैसे भी अभी सर्दियों का टाइम आ गया है. गरम गरम churros with some chai. It's a fantastic combination. So as you can see, हमारे delicious churros तैयार हैं with our salted caramel dip and the Nutella dip, and they are smelling so good. Cinnamon की smell ही इतनी मज़े की होती है. And what I'm going to do is I'm going to dip one of my warm churros that's coated in the cinnamon sugar into my favorite salted caramel. I prefer that over the chocolate one. I'm going to eat it. I can polish all of this off. I cannot wait for you guys to try this. You know the best part is कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, perfect amount of मीठा है. You guys are going to absolutely love this. Please try out this recipe and let me know how it turns out. I hope आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. Please let me know in the comments below what you think after trying it out. Please subscribe to my channel and click on the bell icon to stay updated with all the latest videos. I'm going to be sharing some amazing recipes with you all.